فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ دودھ میں مینگنی نہیں ڈالنا چاہیے۔ عمل کے ختم پر عمل کی قبولیت اور عمل کو اللہ کے دربار میں ڈرتے ہوئے پیش کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے غفلت میں نہ گزرے۔ ایک بار اور یاد دہانی کی جاتی ہے، الف کی طرف سے جو فارم تقسیم کیا جا رہا ہے اور اقرا گروپ کی طرف سے فیڈ بیک فارم تقسیم کیا جا رہا ہے، اس کو ضرور فل اپ کر کے دیں، خانہ پوری کر کے دیں۔ تیسری بات، اس پروگرام میں انوکھی، امتیازی، یونیک قسم کی خصوصیت یہ رہی کہ ایک فلور میں انڈور گیمز، کھلونے لا کر ہمارے محترم فہیم صاحب نے رکھ دیے۔ جو عورتیں، جو مائیں بچوں کے ساتھ آتی ہیں، ان کے بچے وہاں پر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیے گئے، یکسوئی سے وہ سن پائی ہیں، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ حضرات سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ ان کے اس قسم کے کھلونوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وقال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم و مکرم مفتی ابوبکر صاحب، دیگر مفتیان کرام، علماء کرام، بہنوں، بھائیوں اور بچوں، اللہ کا بڑا احسان ہے ایسے زمانے میں جب کہ دین مٹ رہا ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ دین کو مٹانے کی آرگنائز طریقے سے کوششیں ہو رہی ہوں، ایسے زمانے میں ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس بات کی فکر کرنا کہ میری زندگی کے اندر دین کیسے آ جائے، یہ ہے اسلام کا معجزہ۔ اسلام زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا قیامت تک، جب تک اللہ چاہیں گے۔ جتنی آوازیں اٹھتی ہیں تو یوں سمجھو کہ دین پھیل رہا ہے، لوگ دین پر آ رہے ہیں۔ اسی وقت آوازیں اٹھتی ہیں، آوازیں بیٹھ جائیں تو سمجھنا کہ کچھ گڑبڑ ہے، خلاف آوازیں اٹھتی ہیں تو سمجھنا کہ دین پھیل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ ایسی مجلسیں ہوتی رہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرتے رہیں اور ہم اپنے مقصد کو پہچان کر میننگ فل زندگی گزاریں۔ یہ ہے آج کا موضوع ہونا چاہیے، بلکہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی میننگ فل ہو جائے۔ میننگ لیس زندگی گزر رہی ہے، میجارٹی جو ہے میننگ لیس گزار رہے ہیں۔ جتنی محنتیں اور جتنے بیانات صبح سے ہوئے، وہ سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری زندگی میننگ فل ہو جائے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیوں پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کیوں رکھ رہا ہوں۔ ہم سوال کرنا چھوڑ دیے، اپنے علماء کرام سے ہم سوال کریں، اللہ ہے تو کہاں ہے، بتاؤ، آپ کو دکھا تو ہم کو بھی دکھاؤ۔ ہم سوال کرنا چھوڑ دیے،
हम सवाल करें, मुफ्तियों कराम के साथ बैठें, उलमा कराम के साथ बैठें। ये मजलिस इसी वजह से है कि हमारा तारुफ उलमा कराम के साथ हो जाए, माशाअल्लाह, तो हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल हो जाए, मीनिंगलेस ज़िंदगी नहीं गुजारें। जो मेरा मौजू है आज का, लास्ट 150 ईयर्स में मुस्लिम डॉक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उससे पहले के डॉक्टर्स का तो आप सुन चुके हैं, सुनते रहते हैं। आज सुबह में डॉक्टर मुर्तज़ा भी काफ़ी डिस्कस करे ना, लेकिन ये जो मौजू है 150 ईयर्स का, वो कभी डिस्कस नहीं हुआ, मेरे ख्याल में कभी डिस्कस नहीं हुआ। और इस मौजू के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, पूरा इंटरनेट इससे खाली है। खाली है मतलब इस टॉपिक के अंदर नहीं है। ये 4 महीने पहले मेरे को टॉपिक मिला और 4 महीने में काफ़ी मैंने कोशिश की और मैं डॉक्टर तंजील को बोला कि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी थोड़ा सा मवाद जमा करके दो, मेरे को सिर्फ 2-4 मिल रहे हैं, 2-4 के अलावा कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो तंजील बोले कि मैं पूरा सर्च कर लिया, ये टॉपिक के ऊपर अपने को मवाद नहीं मिल रहा है। मैं चारों AI के जो सर्च इंजन्स हैं उसमें डाल के देख लिया, डिफरेंट तरीके से डाल के देख लिया, लेकिन कोई मवाद नहीं मिला। तो लास्ट सैटरडे मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब के साथ मीटिंग थी, तो मीटिंग में बोला मुफ्ती साहब ये टॉपिक को तो चेंज करना पड़ेगा, ये टॉपिक के ऊपर कोई मवाद नहीं है। तो मुफ्ती साहब पूछे कि कितना मवाद है। मैं बोला कि सिर्फ 3-4 दिख रहे हैं, 3-4 लोग दिख रहे हैं उसके नामा, उसके अलावा कोई नामा नहीं आ रहे हैं। मुफ्ती साहब बोले कि ठीक है उतना बोल दो। मैं बोला ठीक है, ऐसा करो तुम अपनी तरफ से कुछ तो भी बोल दो, ये भी बोले मुफ्ती साहब। तो मैं अपनी तरफ से जो बोलना है उसके ऊपर प्रिपेयर कर लिया, साथ साथ इस बात की कोशिश करा कि मैं कुछ मवाद हासिल करूं। अब जो मवाद हासिल मैंने किया वो आपके सामने है, अब आप देखिए। Introduction. In the vast history of Islamic civilization, medicine has always held a prestigious place. From Ibn Sina and Al-Zahrawi in the golden age of Islam to contemporary pioneers, Muslim doctors have contributed significantly to both the theory and practice of medicine. Today we revisit the remarkable achievements of Muslim doctors from the last 150 years, men and women whose groundbreaking research, clinical innovations and humanitarian service have advanced the field of medicine globally. As we stand at the crossroads of science and service, let us draw inspiration from these modern day trailblazers, and recognize that the path of excellence is not just behind us, but within our reach. My message is very clear. Contemporary Muslim doctors continue the long Islamic tradition of Muslim innovation, making significant contributions to healthcare globally through clinical practice, research, and humanitarian work. These professionals are actively advancing medicine while also addressing the specific needs of diverse Muslim communities. Ayub Khan Umayya, very attractive name. Ayub Khan Umayya was a Pakistani-American neurosurgeon famous for inventing Umayya Reservoir, a device that delivers medication directly into the brain. His work also focused on traumatic brain injury research that helped lead the creation of the CDC's National Center for Injury Prevention and Control. Umayya's contribution revolutionized the treatment of neurological disorders and cancer, enabling more precise and effective drug treatment. He is Umayya. He invented this implantable device which consists of a reservoir connected to a catheter to the brain's ventricles. It allows for the repeated administration of drugs such as chemotherapy directly into the cerebrospinal fluid without the need of lumbar puncture. He has revolutionized, he has tremendous number of research and papers. As I said, his traumatic brain injury के ऊपर इनका काफ़ी research है. Umayya was a leading expert in TBI. His research on the mechanisms of cerebral concussion, particularly using primate models, was found to the field.
Legacy. Umayya was a prolific writer, publishing over 150 articles, book chapters and books. He broke barriers in neurosurgery and inspired future generations of medical professionals. Alhamdulillah. Professor Zulfikar Bhutta, not Bhutto. He is from Aga Khan University, was ranked among the top 100 scientists in medicine globally by research.com. This recognition is based on factors like his H index, publications and citations, and highlights his significant contributions to global health, particularly in the maternal and child health. Moin'Aabaad umbrella, IVC filter. The Moin'Aabaad umbrella is an early permanent type of inferior vena cava filter developed by Dr. Khazi Moin'Aabaad to prevent pulmonary embolism. It was one of the first intravascular devices used for this purpose, but is now primarily of historical interest. उसके ऊपर काफ़ी डेवलप्ड हो गए, नए नए फिल्टर्स आ गए. तो मोइनउद्दीन के नाम का जो एम्ब्रेला है जो फिगर में दिख रहा है वो अभी यूज नहीं होता, बट ही इज द पर्सन हु हैज स्टार्टेड दिस. द कॉन्सेप्ट वाज हिज आइडिया. Nisar Sayyed is a radiation oncologist of BB Cancer Hospital. BB Cancer Hospital, opposite Press, Hyderabaad, was established by Nisar Sayyed. He is American radiation oncologist. His research, the Sayyed Neblet template, is a medical device used during brachytherapy, a form of internal radiation therapy for gynecologic malignancies, including advanced or recurrent uterine cancer. It helps guide the accurate placement of needles or catheters to deliver radiation directly to the tumor. He uses this for prostatic cancer also. Like the cervical cancer, he uses this for prostatic cancer in males. Then Hussain Abdul Sattar, Assistant Professor of Pathology, University of Chicago. Dr. Sattar has authored several published research articles and abstracts and has authored the female reproductive and breast chapter in the upcoming edition of Robbins Basic Pathology. He is the owner of pathoma.com. He has revolutionized pathology studies. The reading pathology is revolutionized by this person. Meet the beloved Muslim professor who revolutionized the pathology course. If you take his course, your score will be 4% more in USMLE. 4% more with his his program. That is revolutionized. It has been researched. Lot of research has been done for, and he is American born. He is American born, and he did medicine and pathology from America, and he went to Darulum Karachi. He stayed there for I don't know how many years, minimum 4 to 5 years, did Alim course, and he teaches Hadith in his masjid weekly. And he says, I teach pathology the way Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam used to teach Sahaba. And that is the way I have revolutionized pathology studies. A big man. When people would sit with the companions, जो सहाबा के साथ बैठते थे, they would feel like, how can I become like them? हमारे साथ होता कभी? सहाबा के साथ जो बैठ जाता, तो ये सोचता था कि मैं इनके साथ कैसे बन जाऊं, इनके वैसा कैसे बन जाऊं? How can I become like them? How can I be so loving and so warm and so welcoming? अजीब बात, अजीब. बड़ा आदमी बोल सकता है ये बात. Because of their desire to serve. हम खिदमत लेना चाहते हैं, वो खिदमत
करना चाहते थे, फर्क इतना है. And you saw what happened. They ignited the planet with the law of Allah. He is Hussain Abdul Sattar. Then this man has revolutionized eye surgery in Kerala. He has 3 big hospitals. Muhammad Swadikh, he is teacher for FRCS ophthalmology. His center is recognized for ophthalmology training for FRCS. Is a examination center for FRCS. He has been to Hyderabad for a FRCS exam as an examiner for LV Prasad Eye Institute. So we requested him to come to Nitya Diagnostic Center, and we had doctors gathering with him. Very, very simple and humble man. He has revolutionized eye in just like LV Prasad in Hyderabad is his hospitals, Salama hospitals in Kerala. 16 years training and he is examiner. अगर किसी को ऑप्थेल्मोलॉजी करना है या फेलोशिप करना है, this is one place. Then Dr. Muhammad Javed Ali is an ophthalmologist and oculoplastic surgeon at the LVPI in Hyderabad. He specializes in dacryology and is an internationally recognized clinician scientist who also holds several leadership and professional positions, including heading the Govindram Sexeria Institute of Dacryology at the institute. He has to his credit 704 publications at the time of this writing and has delivered 401 conference lectures, including 21 keynote addresses. He has conducted 28 instruction courses and 34 live surgical workshops and has been honored with 44 national and international awards. At the time of this writing, he has H index was 46. I-10 index is 227 and citations were 8004. He is Javed Ali. ये जो हॉस्पिटल डैक्रियो का हॉस्पिटल है ना, गोविंद राम सेक्सेरिया इंस्टीट्यूट. गोविंद राम सेक्सेरिया जो है मारवाड़ी है बॉम्बे के, जिनको आंसू कंटिन्यूस बहते थे एंड पूरी दुनिया फिर लिया था उन्हें उसके ट्रीटमेंट के लिए. तो कोई दुनिया में किसी जगह भी, अमेरिका कहीं भी उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ. When he came to know about Javed, he came to Hyderabad. Javed operated on him and he has paid 5 crore rupees to LV Prasad Eye Hospital to build Dacryocysto department for Dr. Javed. He has prestigious Lester T. Jones Surgical Anatomy Award instituted by the American Academy of Ophthalmology, American Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, and he is the visiting professor for Harvard and all the major institutes of the world. अपने वालिद के स्कैन के लिए मेरे पास आए थे. ही वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल. मैं बोला आप हॉस्पिटल कब जाते हैं? बोले कि सुबह में 5 बजे जाता हूँ. वापस कब आते हैं? रात में 8 बजे 9 बजे वापस आता हूँ डेली. ये कोविड से जस्ट पहले था या कोविड के बाद का था, याद नहीं आ रहा है. बहरहाल मैं बोला आप कभी हम आपको बुलाना चाहेंगे. तो बोले कि भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ. तकरीबन लास्ट ईयर 200 मेरे विजिट्स थे एब्रॉड लास्ट ईयर में. ये कोविड की बात. लास्ट ईयर मेरे फॉरेन विजिट्स 200 थे एक साल में. He is Javed Ali. He described 3 new diseases of the lacrimal system along with their classifications and clinico-pathologic profiles. यह है स्पेशलाइजेशन. ऐसा होना चाहिए. एक डक्ट को पकड़ के उन्हें पूरी जिंदगी गुजार दिया उसके. जो most of the ophthalmologists, they don't care also. They don't even care also.
There is no separate department for dacrocystography in the whole world. Americans अपने आप को ophthalmology में leaders बोलते हैं. Ophthalmology में Americans non-white को ophthalmology नहीं देते, बल्कि Jews पूरे control करते हैं ophthalmology को. Highest paying भी specialty है, a very sensitive specialty है, and they are very proud of it. And Javed is visiting them frequently. Then Khalilullah, cardiologist, AIIMS. He is an Indian cardiologist and a former honorary physician to the President of India. He is a recipient of Padma Bhushan in 1990, the third highest civilian award in India, and Padma Shri in 1984, the fourth highest civilian award in India. He also received the highest award a doctor can receive in India, is the B.C. Roy Award in 1984. He developed the first indigenous pacemaker, Khalilullah Mendez, in India while undertaking his DM cardiology at AIIMS, Delhi in 1969. He also edited the first Indian textbook of cardiology. He is an alumnus of Nagpur University, Government Medical College, Nagpur, where he completed his MBBS 1960 and MD Medicine in 1965. He is Khalilullah. He is alive. He still practices. Gyani Zail Singh is awarding him Khalilullah Mendez stent. Then Mohsin Wali is a cardiologist. He is a highly respected and famous Muslim doctor in Delhi. A distinguished cardiologist, he is best known for his long tenure as the honorary physician to 3 presidents of India. Wali, who is reported to have contributed to the introduction of geriatric medicine in India, is a fellow of the American College of Cardiology as well as the World Health Organization. The Government of India awarded him the civilian award of Padma Shri in 2007. He is Dr. Wali. I met him in one of the conferences. And Dr. Ziauddin, Sir Colonel Ziauddin has established JNM Medical College in Aligarh Muslim University. Big man. He has established JNM, Jawaharlal Nehru Medical College in Aligarh Muslim University. He is the founder. Probably he is sitting in the center. I don't know, but here's the picture. Then Dr. Muhammad Abdul Hai of Patna, the famous man, comes from the distinguished family of educators. He was a renowned physician, FRCP Edinburgh, emeritus professor of medicine, Princess Wales Medical College, Patna. Today, this college is popularly known as PMCH. He was the personal physician for the President of India. His distinguished achievements were recognized by the government, and he was honored with the Padma Bhushan. Padma Bhushan. He was the personal physician of Dr. Zakir Hussain, ex-President of India. He is the son of Abdul Hai, Muhammad Abdul Hai, Ahmad Abdul Hai. He is a surgeon, distinguished and medical educator, renowned for his contribution to healthcare and medical research in India. Born in Patna, Bihar, Dr. Hai developed a passion for medicine early in life, which led him to pursue a career in surgery. He completed his medical education at the prestigious Patna Medical College, where he also served as a faculty member, mentoring numerous students who have since become leaders in the medical field. Very respected man in Bihar. Then Dr. Zohra Begum Khazi, 15th October 1912 to 7th November 2007, was the first Bengali Muslim female physician. She was awarded the Tamgha Pakistan in 1964, Begum Ruqya Padak in 2002 and Ekushe Padak in 2008. She was born in India, migrated to East Pakistan. She is a student of Lady Hardinge Medical College. In the British India, she was born on 15th October 1912, Raja Nandgaon. She did not marry. She served whole life to the society. She did not marry. Then A.R. Fakhi, oncosurgeon at Tata Hospital, worked for 30 years heading the head and neck surgery department. 30 years. Excellent surgeons. Huge surgeries.
He and Dr. Sultan Pradhan dominated 2 decades in Tata Memorial Hospital in head and neck surgery. This man also, he's still alive. Faqih is not alive. Sultan Pradhan is alive. He still practices. He gives advices. Head and neck surgery. One of the top surgeons in India. Huge number of papers to his credit. One of the excellent, most respected surgeons of Tata Memorial Cancer Hospital, Bombay. Then this is from Kashmir. Muhammad Sultan Khuru, gastroenterologist. He discovered hepatitis E. Many of us may not be knowing that hepatitis A, B, C sune, ye E kahan se aa gayi? E was discovered by Khuru, Dr. Khuru. He is the man. He is the professor, head of the department, Sher-e-Kashmir Institute of Medical Sciences. And he has huge number of research. He has researched, this is one of the most published, accepted, cited paper, recurrent pyogenic cholangitis, the hepatolithiasis by Professor M.S. Khuru of Jammu and Kashmir. Then Muhammad Rela, I think everybody knows about him. Rela is a transplant surgeon. He is a world #1 transplant surgeon in liver transplant. He is a world-renowned liver transplant surgeon and a pioneer in the field with over 30 years of experience. He is known for performing one of the world's first infant liver transplants, which earned him a Guinness World Record, and for his leadership at the Dr. Rela Institute of Medical Center in Chennai, India. Dr. Rela is also a professor of liver surgery and transplantation at King's College Hospital, London. One of the entrepreneur has invested on him to start Rela Institute of Medical Center in Chennai. He has not invested, he just works there. He is a Rela. 4,000 liver transplants and highly regarded in this field, having published over 400 scientific articles on liver transplantation and complex liver surgeries. This person has really the price, what I searched and got it, and this is the person. Rafiuddin Ahmed, the father of modern dentistry in India. कोई dentist है तो पूछ सकते हैं इनको कि पहचानते क्या इनको. Rafiuddin Ahmed, December 24 to 1890 to February 65, was an Indian dentist, educator and later minister in the West Bengal cabinet, who founded the first dental college of India, the Calcutta Dental College, later named Dr. Rafi Ahmed Dental College and Hospital, where he remained its principal until 1950. ये price catch है. I never knew that dentistry was started by a Muslim in India. Then C.M. Habibullah, probably a new generation may not be knowing this person who started he's the first gastroenterologist of Andhra Pradesh. He is the father of gastroenterology in India. I included him because he has awarded 64 PhDs to his students. 64 PhDs to his students. Ejaz Habib, he is his son. He is practicing in Hyderabad. One of the top. Actually, he was about to start liver cell transplant in Hyderabad, but unfortunately he had a heart attack and expired. He started his career in Usmania Medical College. Then Abdul Khaliq is a urologist in Delhi in a private practice. I included him because at the age of 60 he started doing HIVs. He completed HIVs and then he completed Alim course of 8 years from Darul Uloom Deoband. And now he is doing IFTA and he practices also. He practices also. He is a good urologist. Huge practice. Then famous doctors of Mumbai, India, Dr. A.R. Undre is a surgeon with a long association with Grand Medical College, one of the big medical colleges of India, and a JJ hospital in Mumbai, where he served as a professor of general surgery for 25 years. इनका फोटो नहीं मिला नहीं तो लगाता था. Then Muhammad Farooq Lokhande, Saifi Hospital, is one of the top neurosurgeons in Bombay. He did his MCH from Sion Hospital, one of the
very big and very good neurosurgery hospital, Sian Hospital. He is Dr. Farooq Lokhande. Then M.A. Majid, first neurologist of South India, first Muslim neurologist of South India. He was here in our last conference. He delivered one of the lectures. He was a very good motivational speaker. He is a poet in Urdu and Marathi. Alhamdulillah. Then some of the medical professionals from America, Asim L. Padela, an MD who is a professor in Department of Emergency Medicine and the Medical College of Wisconsin. Arshia Wajid, a founder and former president of American Muslim Health Professionals. Other notable individuals, the search results also point to some of the professionals that Dr. Laila Azam and Suhad Murar, who are involved in research and medicine at the Medical College of Wisconsin. Faisal Khazi and Rabia Akram are also mentioned as past leaders of the American medical health professionals. Then British top people, Asma Nafis and Dr. Samira Usman, Aziz Surani and Sahira Dar. Then surgical oncology, Dr. Majid Ahmad Talikoti is an Indian surgical oncologist who has performed 16,000 surgeries. He is the director of surgical oncology at Moolchand Healthcare in New Delhi and is known for training the next generation of surgeons. He also advocates for accessible cancer treatment through his affordable Medicant hospital in Jharkhand. He is a famous pediatrician from Coimbatore. He is the first person who saved 800 grams baby. A big name in Coimbatore of this person, Abdul Qasim Jalil Ahmad. Then from Kasturba Medical College, Dr. Samina Haroon and Haroon H. from Kasturba Medical College, Mangalore, developed a patented device for monitoring gynecological disorders. The device enhances early detection and diagnosis of conditions affecting women's health. Then Dr. Parvez Ubaid, an ophthalmologist from Assam, India, established the ERC Eye Clinic network to provide affordable and accessible eye care across Northeast India. His hub and spoke model and use of digital technology have served over 1 million patients. And I included this person just because he has started, assisted reproductive technology in India. He was the Professor Mukhtar Alam. He is a brigadier from AFMC Pune. Then the Nobel Prize winner of this year. He is a refugee. He is a refugee. I was born in a family of refugees. He is from Palestine. My parents could barely read and write. Talented people exist everywhere. That's why we should focus on unleashing their potential through providing them with opportunity. He was a refugee in Jordan, migrated to USA, and his research in chemistry has led him to Nobel Prize this year. Umar Wanes Yagi, his name. He has chemistry. Then three legendaries of our Andhra Pradesh. I would like to include them because of some reasons. Dr. Syed Abdul Mannan, very senior physician, never asked for the fees. He was MRCP, London, never. Very popular man, very popular. मैं एक दो खत मिला, आप दिल खुश हो जाना मिल के, जब बोलते हैं ना आप याद रह जाना मिला, इतने humble. One of the top physicians. He is a physician for royal family of Hyderabad, Nizam's family. Then second is Zafar Naqshbandi, MBBS, Aurangabad, general practitioner
in Aurangabad. I met him some 10-15 years back when he was 85 years and he expired. Down to earth man. From a big family of Zakaria, very big family in Aurangabad. He has served the community for very long time. Very long time. Then Dr. K.A. Ismail, MBBS, Kurnool. He expired in COVID. He is our Dr. Iqbal's father. He is known for 2 rupee doctor. 2 rupee Dr. Ismail Hussain, who eased burden of lakhs passed away due to COVID-19 in Kurnool, Andhra Pradesh. He never asked for the money. He is the man. Kurnool famous legendary Dr. K.M. Ismail Hussain, sir, is no more. We will never forget you, sir. Your services, sir. Irrespective of religion, caste, creed, he has served the community for more than 30 years. उनका पोतरा है यहाँ पर, यहाँ बैठा हुआ है. डॉक्टर इकबाल नहीं आए मगर उनका पोतरा है, मेरे को दिख रहा नहीं है. उसका समरा ये मिला कि बच्चे सालेह निकले, उनका बेटा भी पोतरा भी. कुछ करके जाना है. ये बता रहे हैं इस वजह से कि आपको कुछ करना है, आने वाली जनरेशन आपको कुछ याद करे. सो लेजेंडरी physician of Kurnool famous legendary Dr. K.M. Ismail Hussain, sir, is no more. Man who served the poorest of the poor without expecting anything in return. Then Dr. Abdul Ghafoor, Kerala, who founded the Muslim Educational Society, very famous, very big educational society in Kerala. In 64, the far-sighted vision of the great personality did miracles with MES and was the cornerstone of all success that MES achieved. So MES has professional institutions, arts and science colleges, CBSE schools, state syllabus schools, hospitals, women's colleges and other institutions. Muslim Education Society of Kerala. Then Azad Moopen, a radiologist and a businessman from Kerala. He was been awarded by the president. He is the founder of Aster DM Healthcare. He has received Pravasi Bharatiya Samman and has been recognized at global forums for his contribution to healthcare and his philanthropic work through the Dr. Moopen Foundation. Then Father Muller alumnus Dr. Ashik KT awarded patent for groundbreaking medical device. He has invented something like Dr. Ashik skin clamp. He is a dermatologist from Kerala. Nizar, a dentist from Kerala who has collected nearly 15,000 teeth to aid students' dental studies. He aims to set a record for his collection and encourages people to take care of their teeth. Then Indian doctor performs first pediatric stem cell transplant in UAE. A Malayali doctor in Abu Dhabi wrote himself into record books when he performed the first pediatric stem cell bone marrow transplant in the UAE. Dr. Zainul Abidin, a native of Kunnur, Kerala, presently head of the Department of Pediatric Hematology and Oncology at Burjeel Medical City. This is the girl, 5-year-old Ugandan girl. Mumtaz Ahmed Khan. I knew Mumtaz Ahmed Khan, but I never knew that he was MBBS and MS. He is a person who has started Al-Amin Medical College, founded Al-Amin Educational Society, who now runs 250 schools, polytechnics and colleges all over the country. Education is imparted to nearly 2.5 lakh students from nursery to primary, high school, colleges, arts, commerce, science, engineering, law, pharmacy, education, management studies. I thought he was a businessman, but when I was surprised that he is MBBS and MS, he himself. Mumtaz Ahmed Khan, big name. Then Dr. Shahid Jamil, virologist, scientist, research, education and author. He is involved in COVID ke vaccine ka kuch hai inka qissa. Dr. Syed Altaf, appointed director of Khidwai Medical Institute Oncology. He is presently the
Director of Khidwai Medical, Bangalore. Then Unity Hospital, the CP Habib Rahman, Chairman and Medical, is completely devoted to good corporate authority and believes in the absolute contentment of its patients, investors, employees and regulatory authorities. It is our venture to make available a transparent and effective management system. Again, Kerala. Ghazi Yasaral Gil, 1925 to present neurosurgeon, Turkey. He is neurosurgery man of the century, 50 to 1999, a testament to his profound impact on the field. From Turkey. Then Behçet's disease, we all know Behçet's disease, but I never knew that it was invented by Hulusi Behçet, who was a Muslim Turkish. Renowned Turkish dermatologist and scientist born on February 20, 1889. Behçet's most significant contribution to medicine was his identification and description of a disease involving inflamed blood vessels, later known as Behçet's disease. His initial observations began in the 1920s, leading to the detailed description of 1937. Then Aziz Sankar is a Nobel Prize winner, a molecular biologist from USA. Turkish American. His work has been crucial to understanding how cells maintain genetic integrity and how defects in DNA repair can lead to cancer and aging. Munsi Kalayoglu, a Turkish surgeon recognized internationally for his expertise in organ transplant and pediatric surgery. In the US, he performed the first pediatric liver transplant at the University of Wisconsin. This is in US, and Rela has international Guinness Book record. 20 most creative living pediatric surgeons in the world. He is one of them, this person. वो नाम ऐसा है कि समझ में नहीं आता कि कोई अपना भी है बल्कि. Then humanitarian work and global impact. Dr. Sania Nashta, Pakistani cardiologist, global health advocate and founder of Heartfile, a think tank focused on improving health systems in developing countries. Upar wale. Then Abbas Ardeheli, Iranian American cardiothoracic surgeon, instrumental in heart-lung transplantation and mentoring minority physicians. Then Dr. Ghada Karami, Palestinian British physician and academic combining medicine and advocacy for health equity, especially in conflict zones. So ethical and philosophical contribution. Muslim medical professionals also influence healthcare and through ethical discourse and the promotion of culturally competent care. Islamic biomedical ethics, modern scholars and jurists have established bodies like the World Fiqh Jurisprudence Council to address complex medical issues such as organ donation, contraception and stem cell research from an Islamic point of view. Patient-centered cultural competency. Muslim healthcare professionals through their diverse backgrounds advocate for the provide culturally sensitive care. This approach improves patient communication, especially regarding topics like fasting during Ramadan and gender-specific needs. What can we learn from them? These individuals exemplify more than academic brilliance. They embody visionary thinking. ये हमारे में आना है. Visionary thinking, challenging norms and creating new knowledge. Challenging norms and creating new knowledge. Don't accept whatever come to you. Particularly, I am addressing the postgraduates. Don't accept whatever come to you. Challenge it. You challenge and come out with a new procedure. Global response, using medicine to uplift underserved communities. Islamic ethics, blending professional excellence with compassion, integrity and service. Their lives teach us that being a good doctor is not just about having the best CV. It's about serving humanity, innovating with purpose and staying grounded values. इनके वैसा होना है बोले तो कुछ करना पड़ेगा और कुछ करने के लिए अपना फिक्री नशो नुमा को बढ़ाना पड़ेगा. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा. Intellectual development है क्या? Allah has blessed us with intellect, with a higher order and lower order functions. Higher order functions, lower order functions. The lower functions involve
डेली टास्क ऑफ रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, खाना पीना वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब सारे जो है वो लोअर ऑर्डर फंक्शंस हैं जो मीनिंगलेस हो जाते हैं. I started with meaningful and meaningless. So now I am coming to back to my point of meaningful and meaningless life. The higher order functions are those that help us succeed in the test of our life. हम इम्तिहान में हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में हायर ऑर्डर फंक्शंस को बढ़ाकर गए थे. वो अपने से ज़्यादा अपने भाई की फ़िक्र करते थे, अपनी प्यास से ज़्यादा अपने भाई की फ़िक्र होती थी. वो सेल्फिश के बजाय सेल्फलेस होते थे. लोअर ऑर्डर फंक्शंस के ऊपर हम सेल्फिश हो जाते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन के ऊपर हम सेल्फलेस हो जाते हैं. सेल्फलेस जो होते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या है? नंबर 1 रीजनिंग होती है. ये है तो क्यों है, मैं मुसलमान क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूं जैसा हूं, मुझे कैसे होना चाहिए था, मुझे कैसे होना चाहिए था, ये मेरा सवाल है. ये सवाल आपके दिल में है, ये सवाल, लेकिन आप इस सवाल को दबा दिए. अब ये उठता नहीं सवाल, ये उठता नहीं. 10 साल 11 साल 12 साल 14 साल तक का ये सवालात आते रहते. जब हम उसको सप्रेस कर देते तो फिर ये सवाल फिर नहीं आते. ये रीजनिंग खत्म हो जाती, रीजनिंग खत्म हो जाती. अब एमबीबीएस लेना है, फिर एमबीबीएस के बाद एमडी लेना है, फिर एमडी के बाद डीएम लेना है, फिर डीएम के बाद प्रैक्टिस करना है, फिर शादी करना है, फिर एमजी हेक्टर खरीदना है, फिर उसके बाद मर्सिडीज खरीदना है, फिर उसके बाद अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर. सो रीजनिंग आना है, फिर से लाना है. Next, ability to rationalize and find justifications for things. Everything has to be questioned. आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो समझो आप लोअर फंक्शंस में हैं, लोअर ऑर्डर फंक्शंस में हैं. आप क्वेश्चंस करना, आपके बच्चे को बोलना क्वेश्चन करो बोल के, अल्लाह पे क्वेश्चन करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्वेश्चन करना, सहाबा पे क्वेश्चन करना, दीन पे क्वेश्चन करना, ये उलमा को तंग करना क्वेश्चंस करके. जब तक हम दीन इज, इस्लाम इज विद अ रीजन, इस्लाम इज विद अ रीजन, इस्लाम इज विद अ रीजन. इस्लाम इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ, इस्लाम इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ. हाँ, रीजनिंग, इमेजिनेशन, यू शुड इमेजिन, ये नहीं तो ऐसा रहा तो कैसा, ये पेशेंट को ऐसा ट्रीट करे तो कैसा. एंड रिफ्लेक्शन, जो करे उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होना, कॉन्टम्पलेशन होना, गौर और फिक्र, तदब्बर, द ट्रू एंड मीनिंगफुल यूज ऑफ योर इंटेलेक्ट. These higher functions enable us to live a purposeful and meaning life. This is the most important message for today. If we wish to improve the quality of our worship, if you wish to improve your quality of our worship, इबादत, देखो हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हम नमाज मीनिंगलेस पढ़ रहे हैं, पर्पसलेस पढ़ रहे हैं. हमको नहीं मालूम नमाज पढ़ रहे हैं, पहली रकात है, दूसरी रकात है, सजदे में कितने मरतबा पढ़ रहे, क्या सूरा पढ़ रहे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मालूम. आप पढ़ते होंगे, मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं फिक्र कर रहा हूँ इसकी. Our intellectual development फिक्र शुमा must reach maturity so that हमारी नमाज खुशो खुजू से हो जाए. Every child is born with potential for intellectual development. किसी चाइल्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. मेरा बच्चा, मैं टीचर बोल दी कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये डिसेबल्ड है, इसे नॉनसेंस, इट इज नॉनसेंस. एवरी चाइल्ड हैज ए पोटेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. अल्लाह ने उसको पैदा किया है, उसके अंदर पोटेंशियल है जन्नत में जाने का. नहीं तो आप बोलो कि अल्लाह ने गलत पैदा कर दिया, ये जन्नत में जाने के काबिल नहीं है, बोलो. डिसेबल मत बोलो, ADHD मत बोलो, ये नॉनसेंस है सब. ADHD बोलना, ये बोलना डिसेबल्ड है बोल देना, नहीं. हम उसके लेवल पे जाके उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उसको इम्प्रूव करना, ये है मैसेज. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सिखा के गए. साइंस ऑफ लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, क्या साइंस है जिससे हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से पैदा हो जाते हैं. नंबर 1, सतही नॉलेज होती है, हर चीज़ की सतही, सुपरफिशियल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग इसलिए होती, डीप अंडरस्टैंडिंग इसलिए होती किसी चीज़ की. जो आया उसको कबूल कर लेते बस.
The person's understanding remains shallow and surface level. They never explore the depth of meaning. They fail to see the big picture. Means एक चीज आ रही है आपके पास, इंटरनेट, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पहले यूट्यूब था, अब उसमें शॉर्ट्स आ रहे हैं, उन्हें शॉर्ट्स टिकटॉक, ये क्यों लेके आ रहा है? आपके कॉन्सेंट्रेशन को खत्म करने के वास्ते ला रहा है, आपकी सोच को खत्म करने के वास्ते ला रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के वास्ते ले आ रहा है. डिस्ट्रैक्शन इज शैतान. Distraction is shaitan. Concentration is deen. Concentration is deen. Distraction is shaitan. जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो आपको शैतान की तरफ लेके जा रहा है. सिंपल. इस जमाने में, डिस्ट्रैक्शन के जमाने में, अगर आप कंसंट्रेशन के ऊपर मेहनत कर लेंगे आप कामयाब हो जाएंगे, दीन में और आखिरत के लिए, दोनों में. कंसंट्रेशन इज द की. They don't understand the reasoning behind their actions. Life feels meaningless, lived without reflection and depth. Their mind remains limited to lower functions. Counting money, managing accounts, living luxuriously, everything seems intelligent, but life remains meaningless. Number 2, they follow trends without reasoning or logical rejection. They say everyone is doing it, so will I. कोई पर्दा नहीं कर रहा तो मैं क्यों पर्दा करूं? सब यूट्यूब देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं. सब फेसबुक पे है, मैं भी फेसबुक पे हूं. एक बच्ची आई, वेरी ओबीस, 18 year old फीमेल विथ वेट 120 kg, हिजाबी नमाजी. मेरा स्कैन हुआ तो बोले पूछी डॉक्टर साहब मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बोला आपको पीसीओ है. फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो मैं बोला वेट रिडक्शन करना. वेट रिडक्शन नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, बहुत कोशिश कर ली, मैं डाइटिंग करके देखी, एक्सरसाइज करके देखी. नहीं, एक काम ऐसा करो, आप इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करो. अरे डॉक्टर साहब रात में इशा के बाद अगर आप बोल रहे हैं एक्सरसाइज करो बोल के, तो फिर मेरे को नींद आ जाएंगी, मैं सो जाऊंगी. फिर मैं सोने के वास्ते तो बोल रहा हूँ. तो बोले नहीं, रात को हम नहीं सो सकते ना, हम फजर पढ़ के सोते. हम 200 फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे रहते हैं हम रात तमाम, पूरे हर चीज डिस्कस करते, इस्लाम डिस्कस करते, कुरान डिस्कस करते, हदीस डिस्कस करते, एवरीथिंग वी डिस्कस. वी डोंट स्लीप इन द नाइट. ये किसकी बात हो रही है? हिजाबी नमाजी बच्ची की हो रही है. वी फॉलो ट्रेंड्स विदाउट ए लॉजिकल रीजन. ये ट्रेंड है, पूरी दुनिया चल रही है, मैं भी चल रहा हूं. शैलो. They say everyone is doing it. Instead of saying this is wrong, I won't do it. Logically and morally, you should prove. Lacking reasoning and conviction, they yield to social pressures. When ideas develop, in intellectual development, faith and values become the binding force that enables rejecting wrong trends confidently. Then, shallow and unstable relationship. That was read bird eye. उसकी वजह ये है कि हमारा intellectual development बहुत maturity कम है. They easily like people and just as easily lose interest also. They are impressed but cannot trust. They admire scholars but fail to grasp the depth of their teachings. Repeatedly liking and disliking creates mistrust. They become mentally impulsive. Ideally, liking or deciding should come after reflection and convincing reasons, not impulsively. Poor emotional stability. When faced with problems or changes, they panic and lose confidence. Even small disruptions disrupt them. The right attitude is problem, no problem. Inshallah, we'll face it. Allah is with us. We'll consult the specialists in the field and deal calmly. ये maturity है. पैनिक, परेशान, अरे नहीं अब कैसा होगा, अब क्या होगा, अब परेशान नहीं. ये confident लोग, ईमान वाला नहीं करता ऐसा. Then indecisiveness, फैसले ही नहीं होते. They struggle to make decisions, even small ones like attending a party, choosing clothes and naming a baby. Such hesitation comes from the intellectual weakness. अब ये चीजें सुन के दूसरों को नहीं देखना,
हाँ, ये पूरे चीज़ें डॉक्टर तंजील के अंदर हैं, मेरे में तो नहीं है। नहीं, मेरे में है ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरे में है, मेरे को देखना है, मेरे अंदर झांकना है। लाइफ कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू, they fail to build a unified Islamic worldview. They never reflect on big questions. Who am I? Where did I come from? Where am I going? What does my creator expect of me? What are my values? दोपहर में डॉक्टर हारिस के लेक्चर में आ रहा था ना कि हम भी ऐसे समझते हैं कि हमारा मजहब भी वैसा ही है जैसे दूसरों का है। दूसरों का मजहब जो है वो तसव्वुर का मजहब है, तसव्वुर का है। उसके अंदर एक खुदा था, नहीं था, वो ऐसा करा, वो वैसा करा, हमको क्या करना है, ईद आई तो कुछ कर लेना है, बाकी कुछ नहीं है। हमारा मजहब अकीदे का मजहब है, 24 घंटे का मजहब है, सारी जिंदगी का मजहब है। हम इम्तिहान में हैं। हमारा एक इस्लामिक वर्ल्ड व्यू है। हम दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हैं, वैसे नहीं देखते जैसे वो लोग देखते हैं। हाँ, ये हमारा व्यू होना चाहिए कि हमारा मजहब जो है वो हमारी 24 घंटे की जिंदगी के ऊपर लागू है। ये है वर्ल्ड व्यू हमारा। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको मेरे को सोचना है अपने बारे में। अल्लाह करे कि हम ये क्वेश्चंस सोचने वाले बने। देन पूर प्लानिंग होती है इन लोगों से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट को नहीं रखते, फर्स्ट थिंग फर्स्ट को नहीं रखते, प्रॉब्लम्स आती। इस वजह से दे कांट प्लान और प्रायोरिटाइज देयर वर्क। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है तो आपकी प्लानिंग भी नहीं होती। दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन रूटीन एंड अर्जेंट मैटर्स, नो मैक्रो और लॉन्ग टर्म विजन, नॉट इवन ए ईयर्स प्लान अहेड। दे डोंट एक्सप्लोर द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स। सिम्टम्स को ट्रीट करते, डेप्थ में जाके डायग्नोसिस नहीं करते। डॉक्टर्स के लिए खास तौर पे सिम्टम्स को ट्रीट करते। बुखार आया, बुखार की दवा दे दिए। बुखार क्यों आया, पूरा इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोसिस करना। Procrastination. There are many causes of procrastination. One of the causes is intellectual weakness. One major reason for procrastination is lack of intellectual awareness. A person who doesn't value himself cannot fulfill his own intentions. हम अपने आप को अहम समझें, दूसरों को गैर अहम समझे बगैर। हाँ, हम अपने आप को अहम समझें, दूसरों को गैर अहम समझे बगैर। हम अहम हैं इस वजह से कि अल्लाह ने हमको भेजा है। इस वक्त अल्लाह ने मेरी ये एज में इस वक्त पैदा किया और यहाँ मारेगा। ये पूरी मास्टर बिग पिक्चर का प्लान है अल्लाह मियाँ का भेजना। मैं इत्तेफाक से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, इसका प्लान 50,000 पता नहीं कितने हजार साल पहले हो चुका है। अल्लाह करे कि ये बात समझ में आए। लैक ऑफ मीनिंग इन गुड डीड्स। Even good deeds are done without deep meaning. It's rewardable, everyone is doing it. If the environment changes, such actions stop. नमाज पढ़ रहे हैं, माहौल है, नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी जगह चले गए जहाँ कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, नमाज छूट गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर हाल में वो कन्विक्शन होना चाहिए कि मेरे को हर हाल में मेरा अल्लाह मेरे को देख रहा है, मेरे को ये करना है। इस वक्त मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। फिर ये क्या होता है कि यू कैन नॉट ओवरकम ए बैड हैबिट वाइल स्टेइंग ऑन द सेम इंटेलेक्चुअल लेवल। जिस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आपको बुरी आदत पड़ी है टिकटॉक के देखने की या शॉर्ट्स के देखने की आदत, जिस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर आपको यूट्यूब देखने की आदत पड़ी है, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर यूट्यूब की आदत नहीं छूट सकती। आपको अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को ऊपर करना पड़ेगा तो आपकी ये बुरी आदतें जो है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो पान खाने का हो, चाहे वो कुछ हो, फास्ट फूड खाने का आदतें हो, चाहे कुछ हो, ऐसी बुरी आदतें आपको अगर छोड़ना है तो आपको यू हैव टू राइज हायर, इंप्रूव योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सप्रेस एंड कंट्रोल दोस बैड हैबिट्स। अब क्या हो रहा है, कॉलेजेस के पास ड्रग्स अवेलेबल है और चॉकलेट्स में इसमें आदत हो जा रही है। सब खा रहे थे, मैं भी खा ली, सब खा रहे थे, मैं भी खा लिया।
अब ये है, ये स्लाइड याद रहेगी तो बस, लुक अनटू योरसेल्फ, लुक अनटू योरसेल्फ, झांक के अपने अंदर देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, बाजू वाले को देखना है। हाँ, मेरी बीवी में है, मेरे हस्बैंड में ये पूरे प्रॉब्लम्स है, मेरे में नहीं है, नहीं मेरे में है, मेरे में है। आप दूसरों में तब्दीली देखना चाह रहे हैं तो अपने आप पे मेहनत करिए। आप दूसरों पे, घर के दूसरे लोगों के अंदर, बच्चों में, आपकी बीवी में, बच्चों में, बहनों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में अगर चेंज देखना चाह रहे हैं तो अपने आप पे मेहनत करिए। यह है लुक अनटू योरसेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन। करेंगे भाई इंशाल्लाह, अल्लाह आसान फरमाए मेरे लिए भी। Then I'm ending it to message to young doctors, to all the young doctors present today. You are not just inheritors of a great tradition, you are its next chapter. आप लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर है। हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, लास्ट पेज पे है, आपका चैप्टर शुरू हुआ है, अब आपको कंटिन्यू करना है। यू स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जेंट्स। जितने लोग हैं देखे ना, वो उन लोगों के ऊपर, उनकी शोल्डर्स पे आप ठहरे हुए हैं। आपका प्रोफेशन, आपका मेडिकल प्रोफेशन ठहरा हुआ है। योर स्टेथोस्कोप can be a tool of healing but also of transformation. The world today needs doctors who are not just skilled but socially conscious, research oriented and morally grounded. Don't just aim to be employed, aim to make an impact. Pursue research not for prestige but to solve real problems. Treat patients not as cases but as human beings. Use your knowledge not to rise alone, but to lift others with you. Conclusion. The story of Muslim doctors in the modern era is not a closed book. It's not a closed book. It is a continuing journey, and you are a part of it. Let the accomplishments of your predecessors inspire you, not to merely admire, but to emulate, to exceed, and to contribute in your unique way. With whether in labs, hospitals, refugee camps, or health policy offices, you are the torch bearers of this noble legacy. Be the doctor your ummah, your nation, and your world needs. Lead with knowledge, serve with compassion, and leave a legacy. आज से 100 साल के बाद ऐसा कोई लेक्चर हो इसी जगह के ऊपर तो हम में से कुछ लोगों की तो फोटो आ जाए। जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक्स वेरी मच, आप लोग इतनी पेशेंस से इसको सुने, और थैंक्स ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, मुफ्ती साहब, और जो ख़ास तौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जो सर्व करने के वास्ते और हमारी खिदमत के वास्ते यहाँ कर रही हैं। अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अदा फ़रमाए। मुफ्ती साहब को भी ऐसे सेशंस को बार बार करने की और तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। हमारा कहना सुनना है खालिस अल्लाह के लिए हो जाए, और इससे हमको एक बड़ा विज़न हमारे जहन में पैदा हो, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, और हमारे आने वाले, हम अगर एक और चीज़, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अगर मेरा होगा तो मेरे बच्चों का होगा, मेरा होगा तो मेरे बच्चों का होगा, मेरा नहीं होगा तो बच्चों का नहीं होगा। ये सोच लो, ये तय है। जज़ाकल्लाह खैर। अब बड़े साहब आ चुके हैं, बयान भी होगा इंशाल्लाह, फिर दुआ भी होगी, जब के बैठे रहे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ा